Hi everyone, this is Dr.Mrinalini Sharma, and in today's YouTube live, we're going to be talking about breast reduction surgeries. And breast reduction surgeries are one of the most common plastic surgery procedures taken up by women. So today we're going to talk about the few common doubts which a patient has when she thinks about breast reduction. And I'm also going to tell you a little bit about the myths associated with breast reduction surgery and the facts which are going to dispel this myths. So सबसे पहले तो breast reduction surgery क्या होती है? Breast reduction surgery is a surgery where we aim to reduce the size of the breast, as the name suggests. Now, heavy breast can cause a lot of discomfort to the woman, and the most common complaints of a woman who has heavy breast is that she's going to have a lot of neck pain, she's going to have a lot of shoulder pain, and sometimes upper back pain. And most of these are basically weight related symptoms because the breasts are very heavy, so उस weight की वजह से the lady is having all these symptoms. Now कुछ और problems भी होती हैं heavy breast की वजह से, one of them being inability to maintain hygiene. तो क्या होता है कि एक्सेसिवली लार्ज ब्रेस्ट वेट की वजह से स्वेटिंग होती है, और जो आपका अंडर बस्ट एरिया है वहाँ पे इचिंग या रैशेस या कुछ केसेस में फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं. सो दैट इज वन कॉमन प्रॉब्लम which a woman faces when she has a lot of which when she has heavy breast. So when we talk of breast reduction surgery, ये purely a cosmetic surgery procedure नहीं है. This is also a functional procedure, in a sense it also has a functional component to it. And डे टू डे एक्टिविटीज़ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हैवी ब्रेस्ट होने से लेडी को बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन हर नॉर्मल डे टू डे लाइफ. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वे द ब्रेस्ट लुक्स, it is also about how uncomfortable or how uneasy the woman becomes because of the huge size of the breast. Now, few questions which women ask me जब वो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बारे में सोचते हैं, तो सबसे कॉमन कंसर्न जो एक होता है वो ये होता है कि इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो क्या क्या होंगे. तो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी जो है उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो जो है मोस्ट ऑफ देम आर टेम्पररी साइड इफेक्ट्स, इन सेंस हाँ जब हम ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करते हैं तो ब्रेस्ट में स्वेलिंग होगी, क्योंकि सर्जरी है तो किसी भी एरिया की अगर सर्जरी की जाती है तो स्वेलिंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ द रिकवरी. तो रिकवरी के दौरान स्वेलिंग होना is a part of almost every surgery. उस तरीके से similarly when we do a breast reduction surgery also, तो कुछ टाइम तक ब्रेस्ट में अच्छी खासी स्वेलिंग रहती है. दूसरी चीज़ होती है जो आपके निपल सेंसेशन है, वो उसमें चेंजेस आ सकते हैं आफ्टर ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी. सो क्या चेंजेस आएंगे? समटाइम जो आपका निपल एरिया है इसकी सेंसेशन थोड़ी कम हो सकती हैं वंस यू डू अ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी. अब ये डिपेंड करता है कि कितना रिडक्शन किया गया. ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी जो है वो बहुत वेरी करती है, उसका जो अमाउंट है वो बहुत वेरी करता है, एंड जो वेट हम निकालते हैं वो आपके एग्जिस्टिंग ब्रेस्ट का जो साइज है उस पर डिपेंड करता है. सो इफ द पर्सन हैज वेरी लार्ज ब्रेस्ट एंड हमने जैसे somebody comes with a H cup breast or an I cup breast and we perform a reduction in which we reduce it to say a C cup breast, तो उस टाइम पे क्योंकि जो आपकी जो टिश्यू है वो बहुत ज़्यादा निकाला गया है एंड the manipulation has been a lot, उसमें chances of nerve being affected are quite high. And initially on during the post operative period surgery के तुरंत बाद जो निपल की सेंसेशंस में चेंज आ सकता है. पेशेंट माइट फील कि वहाँ निपल की सेंसेशन कम हो रही है या कम फील हो रही है. अब ये ज़्यादातर केसेस में तो परमानेंट नहीं होता है, एंड इन अ पीरियड ऑफ अबाउट 6 months निपल सेंसेशन कैन रिटर्न. बट येस, इन सम केसेस, एक्सेप्शनल केसेस जहाँ बहुत ही लार्ज ब्रेस्ट है वहाँ हो सकता है ये परमानेंटली निपल सेंसेशन थोड़ी सी रिड्यूस्ड रहे. But as I said, this is only in a very small fraction. In majority of breast reduction surgery, especially with the techniques which we now follow, nipple sensation जो है वो normal रहती है. Nipple sensation में कोई खास ऐसा change नहीं आता है, at least long term change नहीं आता है after a breast reduction surgery. Second, जो again बहुत common concern वो ये होता है कि ब्रेस्ट को मैं रिडक्शन कराती हूँ तो
ये साइज जो है वो कितना कम हो सकता है. सो वी ऑलवेज टेल आवर पेशेंट्स कि देखिए आप जब हम ब्रेस्ट रिडक्शन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपका सर्जन ध्यान में रखेगा जब वो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी प्लान कर रहा है. सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपकी निपल की जो ब्लड सप्लाई है, निपल की ब्लड सप्लाई इंटैक्ट रहनी चाहिए. हमारी पूरी कोशिश रहती है कि निपल की जो सेंसेशंस है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए. सो उतना टिश्यू तो हमें छोड़ना ही है कि आपके निपल की ब्लड सप्लाई रिमेन्स इंटैक्ट, and as far as possible the nerve supply of the nipple also remains intact. So it's not entirely feasible to say remove almost everything out of the breast. Some tissue has to be left behind so that you can have a good blood supply to the breast, you can have a good nerve supply to the blood supply to the nipple areolar complex, also a good nerve supply to the area. So उतना tissue छोड़ा जाता है. सो बाकी हम आपको देख के बता सकते हैं कि व्हाट इज द रिडक्शन वी कैन अचीव व्हेन वी आर डूइंग अ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी. सो ऑन एन एवरेज वी वुड से दैट व्हाट वी एक्सपेक्ट इज अबाउट आपका 3 to 4 कप साइजेस डिक्रीज हो सकता है. सो अगर आप मेरे पास एक आई कप के साथ आते हैं या एच कप के साथ आते हैं तो मेरा एम रहेगा आपको एक सी कप के आसपास का साइज देना, जिसमें आपका कुछ ऐसा टिश्यू हमने छोड़ा हुआ है जिससे आपकी जो निपल की जो नर्व सप्लाई है वो इंटैक्ट रहे, ब्लड सप्लाई है वो इंटैक्ट रहे. अगेन हम इसको इस तरीके से प्लान करते हैं कि जो ऊपरी हिस्सा है ब्रेस्ट का वहां से टिश्यू कम निकाला जाए और जो दोनों साइड्स हैं और नीचे से ब्रेस्ट टिश्यू ज्यादा निकाला जाए. तो बहुत टेक्निकल टर्म से देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड इन ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी, बट ऑलमोस्ट universally these days all surgeons prefer a technique in which they are going to leave the upper part of the breast and जो blood supply है उस एरिया से आएगी. So other than that जो साइड्स ऑफ द ब्रेस्ट हैं जो लेडी को यूजुअली बहुत इरिटेट करते हैं कि उनका जो एक्सिलरी एरिया है, जो अंडर आर्म एरिया है, वहाँ का जो बल्ज है वो चला जाए. सो वो हम लोग एम्फोसाइज करते हैं कि दैट इज द एरिया विच इज गोइंग टू बी टारगेटेड मैक्सिमम व्हेन वी आर reducing the size of the breast. So it's not just about randomly reducing the size of the breast. It's also about shaping the breast. So जो unsightly bulges हैं जो साइड में आ रहे हैं ब्रेस्ट के, हम उसको हटा देते हैं. And we also give the breast a much more compact, a much more rounder look rather than just a flattened appearance जिसमें randomly आपका जो टिश्यू जो है निकाला गया. Now, another concern which a patient has in her mind when she comes for breast reduction surgery is about the risk of breast cancer associated with breast reduction surgery. So patients मुझसे बहुत commonly पूछते हैं कि डॉक्टर अगर हम ये सर्जरी कराते हैं तो हमें ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं होगा. ऑल्सो अगर आपकी फैमिली में कोई ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, दैट इज अगेन अ वेरी कॉमन डाउट विच पेशेंट्स हैव दैट ओके डॉक्टर, if I get this surgery done, does it predispose me for an increased risk of breast cancer? So that's again a myth. On the contrary, अगर आप breast reduction surgery कराते हैं तो studies show that the risk of breast cancer decreases. So in some people even जहाँ पे एक family history होती है breast cancer की, कुछ लोग they kind of as a precaution they also get something called a mastectomy in which the breast is removed to prevent breast cancer. So all that goes to show that whenever you're planning a breast reduction surgery, be assured that this is not going to increase the risk of breast cancer at all. So ये जो आपका डर है कि मैं ये breast reduction surgery कराऊंगी तो मेरे breast cancer के chances बढ़ जाएंगे, that is simply a myth. ऐसा कुछ नहीं होता है. Fourth and most important question is whether you'll be able to breastfeed following a breast reduction surgery. तो breast reduction surgery जो है आजकल खास करके बहुत young girls भी करा रही हैं. So it's no longer a surgery जो सिर्फ somebody in their late 30s और early 40s कराने आते हैं. आजकल कुछ young लड़कियां भी हमारे पास आते हैं जिनके breast size इतने uncomfortable हैं कि वो कोई भी they're not comfortable in wearing certain kinds of clothes. वो अपने workplace पे बहुत conscious feel करती हैं. वो अपने peer group में बहुत uncomfortable feel करती हैं. So I get girls as young as 20-22 years वो very uncomfortable कि because of this size of our breast हम लोग दो हम लोग पतले हैं, दो हम लोग shapely हैं, हम लोग अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, या हम अपने social group में बहुत uncomfortable feel कर रहे हैं. So young college going girls might end up feeling very uncomfortable wearing the kind of dresses which youngsters like to wear, and suddenly they feel very out of place. So what I'm trying to say is breast reduction surgery is also being performed in young girls and not only in women who are married
एंड हु हैव कंप्लीटेड देयर फैमिली. सो ऐसे में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कल को आगे जाके ब्रेस्ट रिडक्शन की वजह से जो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी. सो अगेन एज आई सेड, ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में हम सारा का सारा टिश्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम विद इन लिमिट्स टिश्यू निकालते हैं. तो ऐसा नहीं है कि आपकी ब्रेस्ट फीडिंग में कंप्लीटली एंड या आप बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे. हाँ, थोड़ा बहुत रिडक्शन इन ब्रेस्ट फीडिंग हो सकता है, बट स्टडीज हैव शोन दैट a great degree of the breastfeeding function is still preserved, especially जो अगर आप modern techniques यूज करते हैं, प्लान करते हैं अपनी सर्जरी को, तो ऐसा नहीं है कि आफ्टर ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी ब्रेस्ट फीडिंग इज इम्पॉसिबल. सो दैट इज अनदर मिथ which we need to dispel, that अगर आपने ब्रेस्ट रिडक्शन करा ली तो आप आगे जाके ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाओगे. सो that is what prevents many young girls from thinking of this surgery. Another thing which patients ask me is about the longevity of results. So ये पूछते हैं कि हाँ, हमने एक बार ये ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करा ली और कल हमने वेट गेन किया, तो क्या ये दोबारा हो जाएगा? सो व्हाट आई वांटेड टू नो इज, व्हेन यू डू अ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी यू आर रिमूविंग, हम जो निकाल रहे हैं वो यूजुअली ग्लैंड होता है, वो फैट नहीं होता, स्पेशली इन दैट एज ग्रुप ऑफ से and young girls of late 20s, or say even in women who are into their late 30s or early 40s, most of the breast tissue is glandular in nature. Glandular का मतलब है कि वो breast gland होता है, उसमें कोई फैट नहीं होता. तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो दोबारा नहीं बनता. अगर मैंने आज ग्लैंडुलर टिश्यू निकाल दिया तो वो दोबारा नहीं बनने वाला है लाइफ में. सो once a breast reduction surgery has been done, the gland is not going to come back. So the question of that uh, breast इंक्रीजिंग टू द प्रायर साइज, जो पहले साइज था रिडक्शन से पहले, वहां तक पहुंचने की जो संभावना है वो बहुत कम है. हाँ, अगर आप वेट गेन करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट जो आपका फैटी कंपोनेंट होता है ब्रेस्ट का, वो ऑब्वियसली इंक्रीज कर सकता है, द साइज कैन इंक्रीज. बट जो भी आप जितना भी आप वेट गेन कर रहे हैं, ये नहीं होने वाला कि आपका जो साइज है वो प्रीवियस साइज तक पहुंच जाए. सो वंस वी हैव डन अ ब्रेस्ट रिडक्शन प्रोसीजर, दिस इज एसेंशियली परमानेंट, and it is extremely unlikely that you're going to go back to the size you had prior to your breast reduction surgery. So that's one thing which is very, again, very important for a patient to understand, that no, if I've undergone a breast reduction surgery, this is more or less a permanent procedure. Now let's come to another very important aspect of a breast reduction surgery. Let's talk about the scars of breast reduction surgery. Now, as I said, these days many young girls are also opting for a breast reduction surgery. And in most cases, what we counsel our patients is that the scar which you're going to have after the breast reduction surgery is going to be a vertical scar, which is going to come from the area of the nipple areola downwards to your bra strap. Now, this is a single line, and with time it is almost imperceptible. आप 2-3 साल अगर आपके बीत जाते हैं ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बाद, तो ये उतना विजिबल या उतना ग्लैरिंग नहीं होता है. अपर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट में कोई भी स्कार नहीं आता. सो दिस इज नॉट रियली विजिबल इन एनी क्लोथिंग यू गोइंग टू वेयर. ऑल्सो which I something which I repeatedly tell my patients कि ये जो scar है ये आपके it's going to be very well it's going to be very well concealed in your clothing, and it's a very small price to pay if you think about the kind of relief you experience after getting this kind of a procedure. And so आपके weight symptoms चले जाते हैं, you're much more confident about wearing certain kinds of clothes, and जो आपके posture में bad posture changes आ रही हैं, hygiene problems आ रही हैं because of breast reduction, अगर आप वो सब एक तरफ रखते हैं, एक छोटा सा स्कार एक तरफ रखते हैं, then definitely the patient is not really bothered about the scar when she you know appreciates the benefits of getting this procedure. And so scar is not a very big concern, it's not a very major deterrent when you think of a breast reduction surgery. And another popular myth is that it's a very, very painful procedure. So breast reduction surgeries are universally not that painful. People are quite comfortable. ऐसा भी नहीं है कि इसमें बहुत लंबे चौड़े बेड रेस्ट की ज़रूरत है. Most of my patients are able to go back to work within, I would say, 5-6 days of surgery. And हाँ, ड्रेसिंग्स रहती हैं, आप हम आपको रेगुलरली फॉलोअप्स के लिए बुलाते हैं. सो you might require dressings every third day for the first 2 weeks or so. But at the same time, many patients do go back to work, and they do continue their routine
office work or something, even say as early as 5 to 6 days after a breast reduction surgery. Also, the recovery from a breast reduction surgery depends upon the extent of reduction. So अगर छोटा reduction है तो आपका जो quicker return to work होता है, अगर आपका थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ज़्यादा टिश्यू निकाला गया है तो हो सकता है return to work थोड़ा slow हो. But universally speaking, you don't require a period of break from work of more than a week, 10 days after a breast reduction surgery. It's not that kind of surgery where you're down and out for a month or so. So when you plan this surgery, all you need is a period of about 1 week for you to rest, for you to have your post-op visits, and then you can actually plan it in such a way that we can schedule your post-op visits also, even in the first initial 2 weeks period while you're still working. So that's not something which requires a very long break from work either. Now, certain tests are mandatory before a breast reduction surgery. So when you meet your doctor, she'll ask you to basically ask you for any health conditions you might be having. We'll get a routine blood test. We'll get your all your sugars, your hemoglobin, your kidney function test, everything tested. It's a procedure which is usually done in a general anesthesia, almost always done in a general anesthesia. And the time duration of surgery would be 3 to 5 hours, depending on the kind of surgery, depending on the extent of reduction which we're looking at. ये जो है इसमें usually 1 day का stay होता है, and the patient is usually sent back the next day. Now there are something called drains, जो pipes होती हैं जो आपके side से arm से निकाली जाएंगी, which is going to collect all the blood or something, so that we don't want any collection to happen after the surgery. Now that is usually taken out on day 2 or day 3. So overall, as I said, the reduction is a 1 day procedure and hospital stay of about 1 or 2 days, depending upon the comfort of the patient. The entire post-operative course takes about, I would say, 2 weeks. And if you put any staples, any stitches, they're out by 2 weeks. Dressings are also usually out by a period of 2 weeks, and you can wear your normal clothes after that time. Now, there'll be certain changes in the kind of undergarments we want you to wear. So, initially on, we'll be asking you to wear a compression garment, which is customized, or हम आपको बोलेंगे कि आप स्पोर्ट्स ब्रा पहनिए. अंडरवायर ब्रास पहनने के लिए हम आपको मना करते हैं. It takes some time for the breast to settle into its own shape. तो उसको वक्त लगता है, and you can see an improvement in the results over the period of say 3 to 4 months. So initially swelling हो सकती है, breast ऊपर नीचे लग सकते हैं, थोड़ी बहुत asymmetry लग सकती है, but everything settles, and it is about a period of 3 to 4 months when you see the near final results of the surgery. So, this in brief is about breast reduction surgeries. And if you have any further questions, please feel free to contact us, and we'll be happy to help you and guide you through this procedure if you need some help regarding this. Thank you so much for joining me today. Have a great evening. Bye bye.